भैया यार चाय देना। क्या हुआ दीदी, आज बड़ा परेशान नज़र आ रहा है? क्या बताऊं भैया, अपने एकेडमी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस इंस्टीट्यूट में पॉलिटी पढ़ाने के नाम पे डिक्टेशन दे रहे हैं। कब आते हैं कब जाते हैं समझ में ही नहीं आता। डिक्टेशन लेने के लिए थोड़ी एडमिशन लिया था। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके सबसे बड़ी गलती की मैंने, सारे पैसे बर्बाद हो गए। तुम पॉलिटी की टेंशन ले रही हो। यहाँ जीएस पेपर 4 एथिक्स पूरा गोल है, 250 नंबर का होता है। यहाँ एथिक्स के नाम पर मोरल साइंस पढ़ाया जा रहा है। लगता है इसे प्रवचन दे रहे हैं। अगर प्रवचने सुनना था तो 1.5 लाख रुपया फीस काहे दिए हैं? हमारा तो पूरा माथा ही ख़राब हो गया है। भाई तुम लोग की पॉलिटी और एथिक्स प्रॉब्लम है ना, मेरी पूरी पबैड की बैंड बजी पड़ी है। पता है कितना एनालिटिकल सब्जेक्ट है ये, पूरा एक्सपर्ट बनना पड़ता है इसके लिए। सारे स्टेट्स याद करने पड़ते हैं। अभी हाल ही में बालासोर एक्सीडेंट केस हो गया, उसका देख लो। फिर से अभी सबरीमाला केस हो गया। अगर इसी तरह से पढ़ते रहे ना हम, तो ना ही हम पढ़ पाएंगे ठीक से, ना ही देश को हम आगे बढ़ा पाएंगे। पता है कितनी दिक्कत होती है। पूरे 500 नंबर दाव पे लगे पड़े हमारे, पूरे ब्लैक आउट हो चुके हैं हम यहाँ पे। अरे इसी को कहते हैं नौसिखियापन, बचपना, इमेच्योरिटी। तुम लोग मामा फूफा की बातें सुन के, गूगल करके, वीडियो देख के दिल्ली चले जाते हो, कहीं भी एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, असली चीज़ इधर है। ये है लुकमान IAS। यहाँ पे अंसारी सर और उनकी टीम GS फाउंडेशन को पढ़ाती है, जो प्री से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराते हैं। ठीक है, और जो जितनी भी आपकी शिकायतें हैं कि डिक्टेट नहीं करते, एनालिटिकल नहीं पढ़ाते, UPSC में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन नहीं आते, आंसर कैसे लिखें वो सही से नहीं होता, वो सारी शिकायतें यहाँ की ख़त्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, लुकमान IAS में से UPSC में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ये सबूत मौजूद है लुकमान IAS की वेबसाइट पे। अगर आप लुकमान IAS की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो इस साल प्री में 2023 में 60 सवाल डायरेक्ट आए हैं उनके क्लास से, और पिछले साल 2022 में मेंस में 90% से ज़्यादा सवाल उनके डायरेक्ट नोट्स पे थे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या चाहिए? तो मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट गूगल करके मत आओ। सबसे पहले ये पहचानो कि किस जगह जाके आपको पढ़ने से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और वो जगह है लुकमान IAS। समझ गए? बचपन में हुआ मेरा अपमान, बनना था अब तो मुझे बड़ा इंसान, नहीं तो खाली रह जाएगा मेरा जहां। इस बात से रहने लगा मैं बड़ा परेशान। दोस्तों ने बोला बन जा महान इंसान, मैंने पूछा कैसे, उन्होंने बोला ऐसे, पूरे होंगे सारे अरमान, बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। अगर बनना है अधिकारी, पढ़ लो उनसे जिनका नाम है S अंसारी। मिल जाएगा तुम्हें सैल्वेशन, जब सर से पढ़ोगे तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझना है अगर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, तो सर से पढ़ के देखो तुम पॉलिटी। समझ लो UPSC का एस्थेटिक्स, बैठ जाओ क्लास में जिसका नाम है एथिक्स। पूरे होंगे सारे अरमान, बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। पूरे होंगे सारे अरमान, बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। बस एक बार पहुंच जा IAS अकेडमी लुकमान। IAS अकेडमी लुकमान। Means police did not have an independent existence, its own independence. Rather, it would work as just an organ of the state, as state establishment. Yes. Now, after independence, things change. What things change? Now we are no longer a colonial power. It is a democratic state with a promise in the Constitution, we the people of India, with fundamental rights, with enforcement of fundamental rights, with liberal democracy, idea of responsible government, with citizens having all those rights. And hence, administration is the servant, not the master. So,
In that situation, police should work as citizens' institution, not a state establishment. Police should work as an institution of citizen, for citizen-centricness, citizen-friendliness. Today we will learn about the movement of ocean water. There are three types of ocean water movement in terms of waves, tides and ocean currents. Now you may be thinking about this, you may have observed also ocean waves when you visited any coastal areas as a tourist destination also, or let's say you have come across the terms in your 10th standard up to your 10th standard books also. But here we are going to learn in detail about how this movement happens, what are the different factors or forces that are responsible for the movement of this ocean water. And one should also understand whether the ocean water movement is vertical or horizontal in direction. And I will give you some more insights also which you may have felt up till now in a different manner. Let me tell you first the kind of movement that happens in these three types. Waves, we have observed the waves in this manner, right? But what happens? Okay, so many a times a student feel that history is just a subject in which there are only facts and one has to remember. Now if you read history carefully, you will find that there are many logics and many things are there through which you will be able to understand easily the Indian history. In order to elucidate this point, I will highlight two things. For example, while reading the Indian national movement or the freedom struggle, many a time you would have find two words: no rent movement and the second one is no tax movement. With many of the freedom struggle, many of the incidents which we are going on. So what is an escrow account? For example, we can understand it, escrow account is between three people, okay, party 1, party 2 and the guarantor, that is party 3. Let's say for example, I am a builder and I am selling a house to you, you are the consumer, okay, and I am saying that okay, this particular building is going to be completed within next 4 or 5 years. And if you want to purchase a house in this building, a flat in this building, then do one thing, provide me 10% of the token money. So you being the consumer might be having this sense of insecurity in your mind that okay, if I provide 10% and what if you do not provide me the building on time, or what if you do not provide me or you do not fulfill all of your promises as you do during the time of taking the token money, then what will I do at the time when I am taking the actual possession? Then in that case, the escrow account is opened, which is handled by a third party, and this third party takes the token amount from the consumer but doesn't gives it to the builder. Escrow account holder, that is the third party holder, provides this